to my channel The Roxy Coder. Please subscribe my channel and press bell button. आज हम स्टार्ट करेंगे PHP ट्यूटोरियल. ओके, फर्स्ट व्हाट इज PHP? PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो मेनली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं. वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, क्रिएट डायनामिक वेबसाइट एंड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. It is developed by 1994 by Rasmus Lightfoot. A survey W3 Tech show that almost 79 of websites in their data are developed using PHP. It is not only used to build the web apps of many tech giants like Facebook, but is also used to build many CMS content management systems like WordPress, Drupal, Shopify, WooCommerce, etc. PHP is acronym for PHP का जो full form है Hypertext Processor. PHP is widely used and open source scripting language. PHP scripts are executed on the server. PHP is free to download and use. What can PHP do? First, PHP can generate dynamic page content. PHP can create, open, read, write, delete, and close file on the server. PHP can collect form data. PHP can send and receive cookies. Cookies and session क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे. ओके. PHP can add, delete, modify data in database. PHP can use to control user access. PHP can encrypt data. Then why PHP? PHP run on various platforms, support Windows, Linux, Unix, Mac वगैरह etc. PHP is almost all server used today. Suppose Apache server, all server पे PHP यूज होता है. PHP support a wide range of databases. PHP is free. PHP is easy to learn and run efficiently on the server side. Who still use PHP? Today, you will find out about 7 global websites using PHP, including Facebook, Wikipedia, Slack, WordPress. Then example. फर्स्ट HTML का जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट होता है HTML टैग, देन हेड टैग के अंदर होता है टाइटल, टाइटल के बाद हेड टैग को एंड करते हैं एंड उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट होता है. बॉडी टैग के अंदर एक PHP का सिंटेक्स होता है. ये है PHP का सिंटेक्स. उसके अंदर हम लोग PHP का कोड लिखते हैं, देन बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, देन HTML टैग को क्लोज करते हैं. वो बाद में देखेंगे कैसे PHP कोड को लिखते हैं एंड PHP कोड को रन करते हैं. देन टॉपिक्स. मेरा जो इस कोर्स का जो सारे जो टॉपिक्स है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, देन है सिंटेक्स ओवरव्यू, देन वेरिएबल टाइप्स, ऑपरेटर टाइप्स, डिसीजन मेकिंग, लूप टाइप्स, एरेस, string, get and post. Get and post is very important topic in PHP. File include and required, file and IO, functions, cookies, session and oops concepts. ये है मेरा PHP का जो फुल कोर्स का टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स हैं.